Alright, so let's get started with the problem for this episode. That is this, the problem number 10th. So आइए देखते हैं ये problem क्या है. It is saying checking whether a number is a strong number. Okay. Obviously we have to understand first that what is a strong number. Okay. यहाँ पर लिखा भी है description as you can read here. A strong number is a number in which the sum of the factorials of the digits is equal to the number itself. Okay. It is like so simple. So if you remember from this particular series, हमने if I am not wrong, so हमने episode 4 में हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैलकुलेट करना देखा था. ओके, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर भी कुछ लाइक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और ये जो प्रॉब्लम है ये काइंड ऑफ वी कैन से वी कैन कंसिडर बोथ ऑफ दीज are kind of similar questions, okay, kind of similar problems, but yeah, they have differences. And what is that difference, I'll tell you. So what was the Armstrong number? कि simple कोई एक number है and the number, the digits of that number मैं ऐसे represent कर रहा हूँ like XYZ. okay, we extract each of the digits. okay, we raise its power to the number of digits. okay, and ये हम हर digit के लिए करते हैं. हम सबका sum निकालते हैं and if that particular sum is equal to the number itself. Alright, so now let's discuss that what is a strong number. okay, so ये भी बहुत simple है. okay, kind of similar to the Armstrong one कि okay, say for example ये let's take the number 145, I guess. yeah, so let's take this number 145 here. So this is the number. okay, now basically our task is to extract each of the digits from this number, that is right, 1, 4 and 5. okay, एंड सारे डिजिट्स का हमें फैक्टोरियल निकालना है. दैट इज 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल ऑब्वियसली. ओके, एंड आई होप सो गाइज नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. okay, we have also done a dedicated video, a dedicated episode on this factorial of a number, okay, in this series. So yeah, do check it out. okay, so now we have to calculate the factorial. okay, so okay, we know that factorial of 1 is 1, then 4 is obviously 24, 5 is 120. okay, so now that we have the factorials of all the digits, okay, we have to basically perform the sum here. okay, हमें सारे जितने भी आया जो भी एक्सप्रेशन है उसे उसका हमें सम परफॉर्म करना है. एंड ओके, सो जस्ट लेट्स प्लस दिस. ओके, सो 24 plus 1 is 25 and we know and let's check 25 plus 120 is giving us 145. so you can clearly see, okay, that 145. okay, this basically gives us the output as 145. so you can clearly see that it is exactly equal to the number. okay, so yeah, in this case if this condition is satisfying कि जो भी वो नंबर के डिजिट्स है उनके फैक्टोरियल का सम अगर वो ही नंबर आ जाए, so okay, then we can say that that particular number is a strong number. okay, obviously of this particular problem. Now obviously let's really quickly deep dive into the code bit of part for this particular problem and let's directly solve this. okay, and you'll get the idea, you'll get the logic, right? So okay, I've created a simple file, okay, just named as 010. okay, because this is the 10th episode, so yeah, strong number. Alright, so let's start with the boilerplate code and all. So okay, let's start with importing the IO stream using the standard namespace, okay, with the main function. okay, now okay, so let's declare the variable here, number. तो हमने यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाया है यहाँ. द डेटा टाइप ऑफ द नंबर इज़ लॉन्ग. okay, and feel free to keep it as int or like that, but okay, long works fine here. Then simply accept that number. okay, now here's the thing, हम इस नंबर को, ये जो इस नंबर को कॉपी यहाँ पर कर लेंगे. सो ओके, बिफोर दैट ऑब्वियसली बेसिकली वी हैव टू रन अ वाइल लूप हियर. ओके, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज बेसिकली ये जो नंबर हमने किया यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ, बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ दिस. सो सिंपल एक आप अनदर एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट कीजिए एंड उसमें ये ओरिजिनल नंबर जो है यहाँ पर स्टोर होगा. सो बेसिकली वाई वी आर डूइंग दिस, इट इज़ बिकॉज हम जो भी अभी फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ओके राइट, जितने भी फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं, जितने भी मैनिपुलेशंस रहेंगी, वो हम डायरेक्टली इस नंबर पे अगर परफॉर्म करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ दैट नंबर विल चेंज्ड और हम फिर फर्दर ऑपरेशंस में, फर्दर रेफरेंसेस में हम उस नंबर को नहीं यूज़ कर पाएंगे. सो द बेटर ऑप्शन इज़ टू स्टोर अ कॉपी
obviously to store a copy of that particular number to some different variable and do all the operations and manipulations in this particular temporary variable, so that your original number will be saved and stored, and you can use that in your future references, right? तो सबसे पहले बेसिकली हमें आपको रीज़न पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर कंडीशन का. Next, for the lines of inside this loop. So first of all, we have to basically extract the digit. Okay, तो हम digit extract करेंगे how? Temporary variable में we are implementing the modulus operator. Basically हम divide करेंगे by 10. तो होता क्या है कि कोई भी नंबर बेसिकली जो 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर वो लास्ट नंबर देता है. लाइक से फॉर एग्जांपल इफ द नंबर इज 231, सो ये जो आंसर रिटर्न करेगा वो 1 रिटर्न करेगा. दैट मीन्स द लास्ट डिजिट. So we are taking that particular last digit, obviously, okay, and then we are basically maintaining a sum variable, you can say, name it as anything you want, okay, but एक variable maintain कर रहे हैं हम, okay, and then sum की value हम update करेंगे, sum is equals to sum plus, okay, and if you remember, ठीक है, कि हमारा task ये है कि जो भी वो number आएगा उसका obviously जो भी digit आएगा उसको ऑब्वियसली हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, राइट? एंड उस फैक्टोरियल को जो जितने भी डिजिट्स है वो सम अप करते रहना है हमें यहाँ पर. सो इट्स बेटर, ओके, इट्स बेटर नाउ कि टू क्रिएट ऑब्वियसली अ सेपरेट फंक्शन दैट विल बेसिकली गिव अस द फैक्टोरियल. ओके, सो इट्स लाइक एज सिंपल एज दैट. सो लेट्स क्रिएट द फंक्शन एज, सो सर डेटा टाइप देते लॉन्ग, लेट्स क्रिएट द फंक्शन एज फैक्टोरियल, ओके, और नेम एनीथिंग यू वांट, ओके, कैलकुलेट फैक्टोरियल एक्सेप्ट द नंबर लॉन्ग. ओके, आई गेस ये तो नंबर उतना नहीं रहेगा. ओके, लेट्स गिव इट एज लॉन्ग, नो इशूज. नम, ओके, let's really quickly write the code for calculating the factorial of a number. Okay, alright, so yeah, जैसे कि आपने देखा हमने एक फंक्शन लिख लिया that is basically calculating the factorial of that particular number and returning the factorial here, as simple as that. So अब यहाँ पर हम simply इस sum variable को update करा रहे थे. What we will do, or we can simply write sum plus equal, okay, we will basically do कि हम calculate factorial को हम call करेंगे, okay, with the digit obviously, okay, and yeah, that's it. Okay, क्योंकि इस point पे basically factorial calculate हो जाएगा, and say for example 4 था तो 4 का factorial यहाँ पर हो जाएगा obviously 24, and वो sum up हो जाएगा. तो initially तो 0 रहेगा, तो 0 plus 24 will be 24. In the next loop 24 plus that number, then in the next loop that whole number with the next number, and so on and so forth. Okay, then finally temp variable को basically हमें update करना है by how so? Temp is equals to temp /10. इससे क्या होगा कि लास्ट का डिजिट वो हटते रहेगा बेसिकली. जैसे फॉर एग्जांपल द नंबर इज 145, सो 145 डिवाइड बाय 10, you know 14.5 होता है. So if you are using single slash in C++, basically it will neglect the decimal part. Okay, so आपका आंसर आएगा 14. Okay, so yeah, जो next loop run होगा it will run with the number 14. Okay, I hope so you get this idea. So now the thing is हमें simply check करना है कि okay, we have this particular sum variable. Okay, ये sum है जो sum update हो जाएगा. We have to simply check कि if sum comes out to be exactly equal to the number variable, then simply we can print that okay, the number, we can print the number is a strong number. Yeah, that's it. Okay, and obviously if it is not, we can print number is not a strong number, and as simple as that. Okay, so now let's obviously really quickly run this code. Okay, and देखते सब perfect आ रहा है कि नहीं हमारा output. Okay, okay, so let's run the code. यहाँ पर आते हैं, let's run the code here, clang ++ and a dot out. Okay, so as you can see यहाँ पर obviously okay, हुआ क्या कि मैंने यहाँ पर मैंने कुछ display नहीं करवाया, so that's it is so that's why it is stuck right here, but no issues. यहाँ पर like basically what we will do कि simply यहाँ पर इस point पे we will simply see out some message that okay, please enter the number. Okay, now we can surely run this. It will say okay, enter the number, and यहाँ पर simply मैं एक number enter करूँगा. Okay, let's enter 145 first of all. Let's see what the answer is coming, and you can see clearly
ओके, यहाँ पर एक काम करते हैं, कुछ नहीं, वी कैन गिव एंडल हियर एज वेल. Okay. Okay, so as you can see, again if I run the code, I enter 145, you can see it is saying 145 is a strong number, and we know obviously 145 is a strong number. Let's give some other random digit, that is like, say for example like this. I hope so this is not a strong number, and it is saying that okay, this is not a strong number. And okay, let's take a simple, let's say 12. Okay, sorry, let's run the code. You know that 12, if you calculate, okay, 1 factorial 1 हो जाएगा, 2 factorial 2 हो जाएगा. So 2 plus 1 is 3, which is definitely not equal to 12. So the answer should come that 12 is not a strong number, and it is indeed correct. Okay, so yeah, this was the solution for today's problem.